le paradis intérieurement. Donc, le signal, faites croître le pouvoir de discerner. Votre promesse, j'appartiens à l'un, je suivrai les directives de un. Plus vous restez stable dans ce niveau avyakt, plus vous serez capable de discerner Maya. En restant dans ce niveau avyakt, vous ferez l'expérience de la spiritualité. Maintenant, nous allons écouter Moni Didi. ओम शांति। बाबा कितनी अच्छी अच्छी गहरी बातें सुनाते हैं। एक परखने की शक्ति पर हम पूरा महीना मूल्यों से बाबा की पॉइंट सुनते रहे, तो अगर एक एक शब्द पर हम ध्यान दें तो आज बाबा कहते हैं हर कर्म इंद्रिय से अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। ये मुझे एक नई बात लगी, क्योंकि हम हमेशा अतीन्द्रिय सुख को ऐसा मानते हैं इंद्रियों से रहित, अर्थात एकदम आंतरिक मन का आनंद। लेकिन आज बाबा कह रहा है कि हर कर्म इंद्रिय से भी अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा। इसका मतलब जब हम आंखों से देखेंगे, मुंह से बोलेंगे, हाथों से काम करेंगे, पैरों से चलेंगे, तो एक फरिश्तेपन की, एक अलौकिकता का अनुभव होगा। तो बहुत अच्छी बात है और इस पर और मनन करेंगे हम और देखेंगे कैसा अनुभव रहता है। तो कल के लिए हम ये होमवर्क लेंगे और दिन भर में ध्यान रख के कि कैसा अनुभव हो रहा है, क्या इंद्रियों से कर्म करते हुए भी अतीन्द्रिय सुख। तो आज जो हमें कल के लिए होमवर्क मिला है, सत्युगी साइलेंस, यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं साइलेंस हो, संकल्पों की साइलेंस और वाणी की साइलेंस, एक हिसाब से हर कर्म इंद्रिय की साइलेंस में आंखों से भी जितना जरूरी है उतना ही देखें। तो संगम युग की जो हमारी ये स्थिति है साइलेंस के अभ्यास की, तो अभी तो देखो साइलेंस की रिट्रीट करते हैं, 3 दिन साइलेंस करते हैं, या हम सब का अभ्यास है। मैं तो कई बार अपनी बुद्धि को शांत, मन को शांत, लेकिन ऐसा होता है Je garde mon esprit silencieux. बोलने को बहुत कुछ है नहीं जैसे। Il n'y a pas grand-chose à dire de nos jours. Naturellement, जब बैठो कुछ ना कुछ बात करने को है ही नहीं। on parle en général d'une chose ou d'une autre. Maintenant, nous parlons de plus en plus de la connaissance. Nous ne parlons plus d'autre chose. Donc, le travail que nous avons à faire, le silence, in Satyug. Et là-bas, de quoi parlerons-nous? Nos rencontres seront basées sur la communication à travers le drishti. Ce sera à travers les signaux. Nous communiquerons très peu à travers les mots. Donc, Lakshmi Narayan iront se promener, mais ils seront beaucoup dans le silence, avec beaucoup de paix. Avec Brahma Baba, lorsque nous allions
pour marcher, Baba disait ne marchez pas, ne parlez pas, restez silencieux. Donc, Baba disait que les nonnes euh, ne parlent pas lorsqu'elles marchent, les bonnes sœurs. Donc, lorsqu'il y a une situation qui pèse sur notre esprit, alors nous partageons. Mais là-bas, il y aura le bonheur dans la communauté, dans la famille. C'est le monde du bonheur. Donc, de quoi parlons-nous? Donc, l'âge d'or et le silence, c'est ce que nous allons pratiquer. Alors, naturellement, nous allons faire l'expérience d'aller dans le silence. Durant 10-15 minutes, aller dans le silence et donner à votre intellect cette expérience. Donc, ça aussi, ce sont les sanskars de l'âge d'or. Une chose est de comprendre et l'autre chose est d'en faire l'expérience. Nous comprenons parce que nous souhaitons en faire l'expérience. Donc, comprendre, expérimenter, cela a une connexion. Donc, c'est pour cela qu'on dit, est-ce que je comprends correctement? Donc, on entend de nouveau, encore et encore, allons dans le niveau avyakt, allons dans le niveau avyakt, je vais aller dans le niveau avyakt. Donc ça, ce sont des sanskars de l'âge d'or qui nous attirent. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller dans le silence de façon artificielle. Donc, on n'a pas besoin de faire un programme donc, pour être en silence. Donc, nous avons le silence seulement lorsqu'il y a un programme ou une musique. Mais à l'âge d'or, il y aura le silence naturel. La nature d'être en silence sera tellement belle. Donc, et la nature physique aussi sera tellement silencieuse. Le bruit que toute chose aura sera naturel. Et nous voyons maintenant que nous avons besoin de musique, nous écoutons la musique de Baba, nous écoutons des musiques qui sont reliées à la connaissance de Baba, mais à l'âge d'or, il y aura de la musique naturelle qui viendra des éléments. Donc, il y aura aussi des programmes culturels, mais par exemple, quand la sitar, on plaît la sitar, alors c'est une musique très douce. Regardez quel type d'instrument ils ont. De nos jours, il n'y a pas de sitar, il y a la guitare. Les gens aiment le son de ces instruments. Et lorsqu'il y a beaucoup de sons à l'extérieur, c'est parce que l'âme ne souhaite pas écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ils sont occupés à écouter la musique, le bruit à l'extérieur. Mais nous sommes habitués à écouter ce qui se passe à l'intérieur. Et Baba nous dit, chantez la louange de mes vertus. Donc quand on fait la danse de Ras Lila, il n'y a pas besoin d'apprendre à faire cela. C'est une danse que l'on danse lorsqu'on est dans la joie au-delà des sens. Et on bouge les mains et les jambes, les pieds de façon très harmonieuse. Donc demain, nous allons
faire l'expérience de ce silence, tout en restant dans la joie de la décence, et comment rester en silence. Et intérieurement, on devrait faire l'expérience du bonheur, de la joie, de la décence. Donc, dans notre esprit et dans toutes les façons, à l'intérieur de soi, de nous-mêmes, nous devrions faire l'expérience de cette danse intérieure. Demain, Om Shanti. आओ स्वर्ग बनाए अपने अंदर सत्युग की साइलेंस Créons le paradis intérieurement. का अभ्यास करें अपने सभी परिवारजनों के प्रति जागृत Aujourd'hui, और सुंदर रहते हुए nous sommes invités à pratiquer les sanskars de l'âge d'or, Satyug, l'âge d'or, et le silence.